Good morning students. Now today we'll be going through the planning process. Okay, the planning process are also called as the steps of planning. Now here we'll be looking at the first step. So what will be a first step in planning process? It will be setting objective. This is the first step of planning. Here what we do, we select the target for the company. Like here I have written increase in sales by 20%. Now this is the target which we have to achieve. Okay, so first step is just setting the objective or target so that every employee or every activity will be directed towards that particular objective. Every single department will try to achieve this target. Developing premises means what? Like here we'll be making assumptions or scanning the business environment. As we know that business environment is our previous chapter which you have done. So in that we learned about the various factor which influences the business, like political factor, legal factor, social factor, economical factor. Okay, so all these factors are there. So what we'll be doing, we'll be making assumptions. We'll be thinking about it. हम सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है on the basis of past experience. Okay, what happened in the past, we see lot of things. काफी चीजें हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या एनालाइज करते हैं, फ्यूचर को एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. मे बी द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेंज और मे बी पॉसिबल दैट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल मे चेंज. सो दिस इज नथिंग बट द assumptions which are making regarding the future. So while thinking of the planning, we'll also have to think about the future. Okay, so that's why we have learned about the characteristic that planning involves lot of thinking. So here it is, because we are scanning the business environment, so that characteristics can be seen over here. So here we are developing premises, mean thinking about the future. We are making assumptions for the future, okay, which can happen, which is unseen, because future you cannot predict. Okay, so that's why we are just making assumptions towards it. So this is the developing premises, which is the second step of planning. The third step will be listing alternatives. What is alternatives? It is nothing but the way to achieve these targets. Okay, here increase in sale 20% can be achieved by giving discounts, or we can spend some money, or expenditure can be done on advertisements, or we can increase the product line. What is increase in product line means, suppose today we are selling only one single product, now we are bringing variety, like Lux is there of single fragrance, then we'll make more variety of fragrance, like more fragrances will be there, and the people will be showing interest in our soap, like Lux it can be, or it can be any product. So by increasing the product lines, means variety of the product, the people will develop interest and the sales target can be achieved. Okay, same way more salesperson can be hired. If you hire more salesperson, sales team, then definitely they can all achieve this sales of 20%. So definitely all these alternative can turn out to be a successful alternative. Now, evaluation of alternative will be done. What is evaluation? Each and every single alternative which is done, which is simply listed down here, because here we are simply making the list. Now what we are doing, we are evaluating. Evaluating means you are thinking about the positive and the negative aspect of each and every single alternative. Like thinking about advertisement, we know that advertisement, because of this advertisement, most of the people will come to know about your product, but at the same time what will happen, it will incur a lot of cost for us. We will have to do some heavy expenditures, like maybe possible we'll have to hire a brand ambassador like Amitabh Bachchan for our company, and he will be taking crores of rupees from us. So this is definitely good, most of the people will come to know about your product, but the cost will be more. So people awareness about our product is a positive aspect, while the high cost will be a negative aspect. So we'll have to keep all these things in mind regarding each and every single alternative, because evaluating alternative doesn't mean only one single alternative you are analyzing, you are evaluating every single alternative. Okay, now selecting the best alternative. After finding out the positive and the negative aspect, what we do, we will discard those alternatives which are having more negative aspects than the positive aspects. Okay, so we'll be discarding such kind of things and we'll be definitely selecting the best alternative. Suppose here we have selected the more salespersons is the best um, alternative to select this, also to achieve this sales. Okay, so here by doing this what will happen, the best is definitely more salespersons according to us. Okay, so we have done this thing, we have selected this, that we are going to hire more sales persons in our company.
Now the derivative or routine plans are made here, okay, by selecting the best alternative. Because when you select the best way, so definitely you'll have to make some derivative plan which will support your alternative which you have selected. Like here what we can say, like if you're thinking about the employment of more salesperson, then definitely this is the routine plans. Routine plans means all those activities which are going in the company, all those routine activity, it will be a part of it. Like it will be like supporting this somehow this alternative. How? Suppose you have decided that more salesperson we are going to hire, then definitely routine plan of the recruiting team or the people who will be selecting those employees for us, they'll be selecting the best one over there. So they will be hiring more sales team or salesperson. So this will be supporting our alternative. So this is nothing but a routine plan. The daily routine plans will be there, like providing them training materials and all. So this will be simply because your alternative is hiring more salesperson. So definitely there will be some plan which will support this alternative. So definitely some training will also be given to them. So that will be a kind of routine plan because you have selected this alternative. Okay. After this, we will be implementing the plan. What is implementation of the plan? We will select the plans, the best alternative. Now we are being putting it into use. अब उसको हम यूज में लाएंगे, ठीक है। तो वहां पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ड्राफ्ट द प्लान। वो एक कागज पे, it will be like a paper, or he'll be drawing that plan according, suppose we are thinking about production planning, then on the paper that production planning will be done. So that is called as drafting the plan, उसको बनाया जाता है, okay। उसके बाद क्या होगा, सपोर्टिंग प्लान्स आर मेड हियर, ओके। अब सपोर्टिंग प्लान क्या हो सकता है, लाइक एडिशनल बजट फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप सिलेक्ट करते हो कि एडवर्टाइजमेंट आपका बेस्ट अगर ऑल्टरनेटिव होता, तो यहाँ पर क्या होता, कुछ अलग से बजट बनाया जाता है, एक छोटा बजट जो कि हो सकता है उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैम्पलेट्स का एक्सपेंडिचर के लिए कुछ एडिशनल बजट चाहिए। तो ये जो आप बनाते हो यहाँ पर एक सपोर्टिंग प्लान, वो एक्चुअली क्यों बनाया जाता है, बेसिकली टू जस्ट टू गिव एडिशनल सपोर्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट। तो यहाँ पर हम जब इंप्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, पर्टिकुलर प्लान को जिसको आपने बनाया, तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ सपोर्टिंग प्लान भी होते हैं। लाइक हम पॉलिसीज बना लेते हैं कुछ। तो पॉलिसी में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि डिस्काउंट की, तो हम डिस्काउंट में एक पॉलिसी भी रखेंगे, हम डिस्काउंट तो दे रहे हैं बट फिर हम उसको वापस नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आप वापस रिटर्न कर रहे हो, तो देयर बी नो रिटर्न। एक बार आपने परचेज करके ले गए तो फिर वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट बैक फ्रॉम यू, हम उसको वापस नहीं लेंगे। तो ये चीज हम पहले से डिक्लेयर करते हैं और हमारी पॉलिसी रहेगी, ठीक है। तो हम सपोर्ट करती रहती है हमारे ऑल्टरनेटिव को, उसी को बोलते हैं सपोर्टिंग प्लान्स। हियर एडवर्टाइजमेंट होता तो एडिशनल बजट होता उसके लिए कुछ, तो वो चीज हमारे इस प्लान को, अगर एडवर्टाइजमेंट को आप सिलेक्ट करते तो उसको सपोर्ट कर रही होती, तो दैट इज कॉल्ड एज सपोर्टिंग प्लान। जो भी आपने सिलेक्ट किया ऑल्टरनेटिव, उसको सपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं, और ये हेल्प करता है किसमें, सेल्स को अचीव करने में। एक्चुअली जितने भी टाइप के प्लान आप बनाते हो, चाहे जो भी मेथड हो, प्रोसीजर हो, आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हो, वो सब किस लिए होती है, आपके इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है, टारगेट को अचीव करने के लिए होती है, ओके। सिंपली दिस इज द आंसर फॉर दिस प्लानिंग प्रोसेस। नाउ फॉलो अप द लास्ट स्टेप विच इज नथिंग बट फॉलो अप। फॉलो अप में हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉलो अप में हम चेक करते हैं कि जो भी प्लान हमने इंप्लीमेंट कर दिया यूज में, जो कि चलता आ रहा है, चल रहा अभी प्रोसेस में है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके, इट इज रियली वर्किंग और नॉट। तो हमको चीज का ध्यान देना पड़ता है। लाइक हमने मोर सेल्स पर्सन का सिलेक्ट कर लिया कि हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है, अब वो वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हमने ये सोचा था कि इससे सेल्स बढ़ जाएगी, बट सेल्स नहीं बढ़ी। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम में हमको फॉलो अप करना पड़ेगा कि ये चीज काम नहीं कर रही है, तो हमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मींस वी विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन इट। आपको फॉलो अप करते रहना है कि जो भी आपने डिसाइड किया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका अल्टरनेटिव काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हमको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सक्सेसफुल प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज हमको करनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे कि हम देखें कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट लाइन हमने सिलेक्ट किया और वो चीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो हमको पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट लाइन में और कुछ ऐसी वेराइटी लाएंगे, या फिर हो सकता है हमें से कुछ उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा जिसकी डिमांड नहीं आ रही है।
क्योंकि वो सेल्स दे नहीं रहे, कुछ ही सेल्स दे रहे हैं, तो हमको उस प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। हमको ये अचीव करना है, जिसमें ज्यादा सेल्स हो रही है ना, हम उसी को बनाएंगे। तो ये हमारा फॉलो अप रहेगा प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अननेसेसरली उस चीज को क्यों बनाया जाएगा प्रोडक्ट लाइन में जिसकी सेल्स ही नहीं हो रही है? तो वी विल बी जस्ट सिंपली फॉलोइंग अप whatever the thing which you have implemented, उसको चेक करते रहेंगे, उसको कंट्रोल करते रहेंगे, करेक्ट करते रहेंगे in order to achieve this objective of us. Okay, so this was the planning process. अब आपकी केस स्टडी में कैसा होता है कि केस स्टडी में बात होगी कि कंपनी ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में कि क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, तो दो चीज के बारे में उन्होंने बात कर ली। नाउ व्हाट दे विल बी आस्किंग यू कि लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, ये जो थर्ड स्टेप है, वो बोलेंगे आपसे कि राइट डाउन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हो गई है, प्लानिंग प्रीमाइसेस की बात हो गई है इसके थ्रू। अब हमको जो थर्ड स्टेप कौन सी है, लिस्टिंग अल्टरनेटिव, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव, ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो ये 3 पूछ रहा है वो यहाँ से। इस तरह से केस स्टडी आती है। हो सकता है इन बिटवीन शुरू हो जाए कि कंपनी ने लिस्ट कर लिया अल्टरनेटिव को, यहां से स्टार्ट कर दिया थर्ड से, फिर उसके बाद इवेल्यूएट कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, प्रॉस और कॉन्स चेक कर लिए किसमें कौन सा अच्छा है, और उसके बाद वो पूछ रहे राइट डाउन द नेक्स्ट 3 ऑल्टरनेटिव्स। तो ये दो ऑलरेडी केस स्टडी में, वो अगले 3 पूछ रहा है, दे आर सिंपली आस्किंग द नेक्स्ट 3। तो आपको सिलेक्टिंग बेस्ट, इंप्लीमेंटिंग और फॉलो अप ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीके से वो पूछ सकते हैं केस स्टडी में, आपको इससे पता चलेगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से स्टेप की बात हो रही है और कौन सी वो पूछ रहे हैं। हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाए, देयर आर चांसेस दैट दे कैन स्ट्रेट अवे आस्क व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस और व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग। सो देयर आर 7 स्टेप्स इन दिस प्लानिंग प्रोसेस। ओके, थैंक यू।